बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश की न्यू बुक से सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। नाम है जिसका वंस मोर टू द लेक और ये लिखी है E.B. वाइट ने। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के प्रो सेक्शन के तमाम तर चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकें और उसको लिख सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन शो हो रहा है उसमें तमाम तर चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के लिंक्स मौजूद हैं, प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, क्लिक करके वो आप देख सकते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। उसकी वजह यह है कि हम इन वीडियोस में जो क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी जो है हम साथ साथ उर्दू में यहाँ पे शो कर देते हैं, ताकि याद करते वक्त आपको ज़्यादा ट्रबल ना हो या इसकी प्रैक्टिस करते वक्त या प्रिपरेशन करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज राइटर टेक अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक? तो इसका जवाब है, द राइटर विजिट्स बेलग्रेड लेक्स बिकॉज इट वाज द प्लेस वेयर ही यूज्ड टू गो in his childhood with his family. The serenity and the scenic beauty impressed them so much that they used to go there summer after summer. They thought there is no place as enchanting as this lake. The nostalgia associated with this place shakes him so strongly that he decides to take a vacation at the same spot once again with his son. अगर आप चाहते हैं कि प्रो सेक्शन के तमाम तरह एमसीक्यूज को आप सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन शो हो रहा है उसमें मौजूद है, वहां से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच की कंसर्न्स द राइटर हैज एक्सप्रेस्ड इन द टेक्स्ट? तो इसका जवाब है, द राइटर एक्सप्रेस्ड some of the concerns in the text once more to the lake. They are love and preservation of nature, strong nostalgia, inevitable transition, and father and son bonding. The writer loves nature and notices very trivial happenings around him, and he expects that time must have changed the lake, but it is intact. He gets so nostalgic that he thinks that even the dragonfly is as same as yesteryears. The engine of the boats used to be inboard, which is now outboard. He gets so much obsessed with the place that he begins to consider himself, his father, and his son him. Question number 3 is, how has the lake changed since he was a boy? The writer finds the lake almost unchanged and intact. The only thing that he feels is the sound of the bird. He feels the sound of the birds unfamiliar and nervous. It is because of the reason that in his childhood the boats used inboard motors which used to make a pleasant and sedative noise, while the new outboard motors make petulant and irritable sound. This is the only thing that breaks his illusion of being a child of the yesteryears. चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें जब वीडियो देखें। उसकी वजह यह होती है कि इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए मजीद यूजफुल वीडियोस बना सकें। सो सब्सक्रिप्शन इज मैंडेटरी। अगर आप ये चाहते हैं कि जो पोइट्री है या पोएम्स हैं उनके भी आप क्वेश्चन आंसर्स को इसी तरह से देख सकें विद वर्ड्स मीनिंग, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करना आसान हो जाए, प्रिपरेशन करना आसान हो जाए, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन मौजूद है उसके अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है तमाम तर पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कंट्रास्ट डज द राइटर मेक बिटवीन द सी एंड द लेक? द राइटर मेक्स द कंट्रास्ट बिटवीन द सी एंड द लेक in the text once more to the lake. He calls the lake constant and trustworthy, which tells that the lake is peaceful without waves. It can be found in the same condition even after a gap of several hours. On the other hand, the sea has waves and it is always rough and noisy. The sea cannot be trusted to be gentle because of its furious nature. The other contrast is of sea breeze. सी की स्पेलिंग SEA होनी चाहिए,
sea breeze which is hard to find in a lake. Why does writer repeatedly call the lake as wild lake? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको पढ़ के यही लगा मुझे कि शायद उजलत में इस क्वेश्चन को बना दिया गया और बुक में डाल दिया गया, क्योंकि पूरे चैप्टर में, पूरे टेक्स्ट में कहीं पे भी उसने इसको वाइल्ड लेक नहीं कहा है। ठीक है, उसने इसको ये कहा है कि बड़ा पीसफुल लेक है ये। ठीक है, तो इसका जवाब भी इसी तरह से फिर हमने लिख दिया है। द राइटर नेवर कॉल्स द लेक अ वाइल्ड लेक, rather he says that the lake had never been what one would call a wild lake. The place is not isolated and the cottages were spread around the shore. Despite being heavily wooded, the shores had farms too, and some of the cottages were owned by nearby farmers. It is clean, unpopulated, tranquil, and well-maintained lake where one can easily accommodate for months. तो अगर आप कहीं पे महीनों के लिए रुक सकते हैं तो ऐसी जगह, वो भी फैमिली के साथ, तो ऑब्वियसली बात है वो वाइल्ड लेक नहीं है। ये पहले भी अपनी फैमिली के साथ आता था, तब भी इसे वाइल्ड लेक वाला जो है मंजर पेश नहीं करता था। Why is the arriving at the lake less exciting now than in the past? The arriving at the lake might be less exciting now than in the past because of the transition of time. When the writer used to be a kid, life was carefree and exciting when everything was a responsibility of his father and he enjoyed every bit of the vacation. But now things have changed. The writer has grown up. He feels his responsibility as a father, which makes him careworn. The emotion of the writer must be very nostalgic, though not very exciting. अच्छा, इन तमाम तर क्वेश्चंस पे काम क्या करना आपने, क्योंकि मैं तो इसे रीड कर रहा हूं एंड इसको आप इतने जल्दी नहीं लिख सकते, तो सीधा तरीका यही है कि पॉज करें, वीडियो को लिखें। ऑब्वियसली मैं इसको टाइम तो नहीं दे सकता कि आप लिखें, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि पॉज द वीडियो, राइट डाउन द आंसर्स। हाउ आर द boat motors different in the present situation? The writer finds the lake almost unchanged and intact. The only change that he feels is the sound of the boat. In the writer's childhood, the boats used inboard motors with 1 or 2 cylinder engines, which used to make a pleasant and sedative noise. Now the boats have started using outboard motors that make petulant, irritable sound. He feels the sound of the boats unfamiliar and nervous. What kind of sensation persisted and grew in the mind of the writer? Nostalgia persisted and grew in the mind of the writer. He felt dual existence of himself. He began to sustain the illusion that he was his father and his son was him. He thought that it was not a new sensation, but it grew much stronger in that setting. He began to retrospect what he used to feel when he would come with his father and felt everything the same way they used to be. अगर आप ये चाहते हैं कि पोएम्स की तमाम तर एमसीक्यूज आप सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें तमाम तर पोएम्स की, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन मौजूद है उसमें शो हो रहा है, उसे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। The last question is, what is the central idea of the text? इसमें सेंट्रल आइडिया कुछ यूं लिखा हुआ है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट वंस मोर टू द लेक, चैप्टर का नाम है वंस मोर टू द लेक, ये ए गलती से लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे। The central idea of the text once more to the lake is the passage of time and the changes that it brings along with nostalgia. Returning to the lake after many years with his son, White confronts multiple changes as he struggles with the illusion that the peaceful world of his childhood and his present existence within it remain the same. अच्छा, ये याद रखिएगा, वाइट ऑथर का नाम है, तो ये मत समझिएगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। But while the lake in its essence remains unchanged, White himself is different now, and so he finally accepts the fundamental irony of life that time changes a man, but the mother nature remains the same. So this is the central idea of this chapter.
इसके अंदर जो राइटर हैं एबी वाइट, वो बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं, बट एट द सेम टाइम ही फील्स कि वक्त की मार किस तरह से मदर नेचर को तो चेंज नहीं कर रही होती, लेकिन इंसान के ऊपर बहुत गहरा असर वो डाल रही होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऑब्वियसली बात है, जिनके पास स्टडी मटेरियल अभी तक मौजूद नहीं है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में 3rd चैप्टर पे बात करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।